हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। हाँ, आज का हमारा सब्जेक्ट है हाउ टू मूविंग बिटवीन स्क्रीन्स। कैसे एक स्क्रीन को दूसरी स्क्रीन पे ले जाते हैं। शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम किया था। वी नीड हमें दो पैकेज की जरूरत होगी, रिएक्ट नेविगेशन कंटेनर एंड क्रिएट स्टैक नेविगेटर। आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इसकी कमांड लाइन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है। ओके, पहले हमें इस दोनों पैकेज को इंपोर्ट करना है। हमें इस दोनों पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। आफ्टर दैट वी नीड फंक्शन ऑफ होम स्क्रीन। ओके, आई रिमूव दिस बिकॉज हमें इस सब की जरूरत ही नहीं है। कॉन्स्टेंट स्टाइल को भी मैं निकाल देती हूँ। ओके, मैं ऐसा ही एक दूसरा फंक्शन बनाती हूँ जिसका नाम दे रही हूँ डिटेल स्क्रीन। Okay. यहाँ तक हम हो चुका है। अभी हम इसे कांस्टेंट स्टेक डिफाइन करते हैं। एक कांस्टेंट ले रहे हैं हम, इसमें हम क्रिएट स्टैक नेविगेटर को डिफाइन कर रहे हैं। ओके, नाउ वी आर मेकिंग अ फंक्शन ऑफ ऐप जिसमें हम नेविगेशन कंटेनर को डिफाइन करेंगे। उसके बाद स्टैक में इसे नेविगेटर डिफाइन करेंगे और इनिशियल राउट का नेम हम होम दे देंगे जिससे वो रो होम पे ही आ जाए। और कंपोनेंट में यहाँ पे हमने होम स्क्रीन डिफाइन किया है, यहाँ पे डिटेल स्क्रीन। ओके, यहाँ पे हमने गो टू होम भी कर दिया है जिससे होम पे नेविगेट हो जाए, और यहाँ पे गो टू डिटेल्स यानी कि डिटेल्स के पेज पे नेविगेट हो जाए, और इनिशियल आउट पे होम। ये यहाँ पे ही रहे। ओके, आई थिंक ओके एवरीथिंग इज परफेक्ट। जस्ट आई फॉरगॉट टू टेक अ बटन component. Import button from React Native. Okay, I save this and मैं एक कोड को यहाँ पे स्कैन कर रही हूँ। पैकिंग ईयर आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोसेस बिल्डिंग का। ट्वेल्व %। कुछ एरर दे रहा है हमें। is invalid. Element type is invalid for a built-in components. Check the render method. Oh, I just forgot here to export default app. हमें यहाँ पे ऐप को रेंडर करवाना होगा। मैं ये भूल गई थी। Okay, just solve this error. Okay, as you can see here in my mobile, here is, hope you guys, oh god, I'm clicking here and see here is a detail screen. Okay, I'm clicking here, so here is a go to home screen. So by clicking like this, we are moving up screens. Hope you guys can check this and just scan this code, and you guys are ready to run the code. Okay, so thank you.